There are three things which are terrible about Indian food. One is the tyranny of the tandoor. One is the myth of the Mughaliya. The third is the curse of the curry. We do not even know the coastal areas where pohe, which is quintessential vegetarian breakfast, has dried shrimps. आप किसी से कहिए अरे वाह क्या कहाँ मिलता है ये? गुजरात में? नहीं, गुजरात तो लाहौल बिला हुकूमत ऐसी बात ना करिए, लानत भेजिए। बिरयानी नाम की कोई चीज लखनऊ में नहीं थी। लखनऊ में नहीं थी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी। माई खिचड़ी वुड बी ए लजीजा खिचड़ी। इस खिचड़ी में खजूर है, प्लम्स हैं, रेजिन्स है, आमंड्स है, एक आध पीस मीट का भी है। ये कैसा खिचड़ी वो खुशबू? करीम would claim that he belongs to the शाही खानदान of the, जब शुरू किए थे 1913 में, तो एक खोमचे में आलू गोश्त और रोटियां बेचा करते थे। I think the politics of food is basically A, caste, B, class, C, tradition, D, the business of big food. The Kayas families had a food which was meaty. The male members in the family ate meat. Right. The female members were vegetarians. They cooked for their husbands. So सीधी बात ये है कि आपका हिपोक्रेसी का ताना माना है, जिसको unfortunately महात्मा गांधी ने was not a Brahman सबके सर पे थोप दिया. Maybe Marwadis and maybe you meant Banyas as a whole are very strongly vegetarian. ये कहाँ से आया? गोश्त में पैसा खर्च होता है, दारू में पैसा खर्च होता है, कुछ खर्च मत करो, गद्दी पे बैठ जाओ, वेजिटेरियन खाना खाओ, fart and belch and eat hing instead of lehsan and say that I am a very pure person. There is no such thing as Indian food. Are we talking about the Punjabi northwest frontier, barra kebabs and Rogan Josh, or are we talking of the Muslim Vazwan, or are we talking of the Pandit Vazwan, or are we talking about Goti or Bengal? Is it a Malayali food? Is it a Suryani Syrian Christian food? It is a Mopla Muslim food? It is the Nambudri Brahman food? Then are you a Hindu? Are you a Muslim? Are you rich? Are you poor? Do you eat pork? You don't eat pork? Do you eat beef? You don't eat beef? So I do think that there is no such thing as Indian food. Hi, you're watching Scroll Adda. I'm Shoaib Danyal, and we are with Pushpesh Pant, who is not a food writer. Certainly not a food writer. Right. I mean, I write about all sorts of things. I have written books on international relations, on law, dance, music, travel, religion, Buddhism, and things of that kind. And I have written about 50 odd books, and 25 probably are food, 25 are non-food. And different times in my life I have done different interesting and not so interesting things. I think you're a victim of your success, Pushpesh जी. आपका food writing इतना popular हो गया है कि लोग भूल गए कि आप IR के prof हैं, JNU वगैरह में पूरा career किया है. That is a bit of a joke. You know, it's a purely accidental. Right. I wrote about 15 books on food and nobody noticed them. Although my co-author was Jakes Kalra, one time great food impresario, Right. the great restaurateur Zorawar Kalra's father. But the problem was that one book I wrote, the India Cookbook, originally it cost about 2,500 rupees. It weighed 1.5 kilos. It was packed in a rice bag. It was published by Phaidon in London. And Phaidon marketed it brilliantly on the Christmas weekend. So the book sold 50,000 copies between Christmas and New Year. They ran another 50,000 copies and it sold out before the fortnight. And the New York Times book review that year put it on the bestseller list as the year's best cookbook and blah blah. क्या बात है? So उसके बाद ये हुआ कि शोहरत हो गई, तो जितने लोगों ने हिंदुस्तान में रॉयल्टी नहीं दी थी, they suddenly said कि अरे हमने आपके संग की किताब करनी है, हमने आपके संग की किताब करनी है. So it was interesting. I recovered some of the lost money. And how I ended up with Phaidon is again an interesting story. I had done a lot of books with Roli Books. My first book on the descent of the Garhwal, the Ramparts of Heaven, was done by Pramod Kapoor. I had done Food Path, the dhabas along the GT road with him. I had done the Buddhist soul recipes, Buddhist peace recipes, Hindu soul recipes, Indian fast food, gourmet journeys in India. He had been paying me a lump sum money. I have no objections to that. But one day Pramod was in a generous mood. He came and told me that Pushpesh bhai, मैंने आपसे किताबें तो बहुत ली हैं, but I have not been able to pay you enough because he brings the books lavishly. He pays the translators more than he pays the author. But I'm no complaints, because even if he pays 1.5 times to the translator than he paid me lump sum, the book gets translated into Portuguese, Dutch, Italian, Japanese, Chinese, whatever.
So you are all दुनिया over. में फैल जाती है जी किताब। दुनिया भर में फैल जाती है और आप भी फैलने लगते हैं उसके साथ. So Pramod said, I will introduce you to a person who will pay you well. So this book was. So you're a rare writer who's making money from books India में. कोई तो और कोई तो पैसा बना ही नहीं रहा है जी किताबों नहीं से। मेरे ख्याल में सब लोग बना रहे हैं. बना रहे हैं। People who are making much more money than I would ever make in my lifetime are people like this great friend environmentalist Ram Guha. हाँ वो He was the original one who signed with Penguin for ₹4 plus contract कि हम आपको ये 3 किताबें देंगे. So then came Gandhi before India, India before Gandhi, India after Gandhi. I'm not suggesting that he's rehashing. He's a brilliant researcher, and he wrote the great history, the Unquiet Woods on the Chipko movement and so on. But they are the kinds of people who make money because all their publishing is done abroad. And the foreign publishers sell, and they write brilliantly. I mean, like Ram writes on cricket, Ram writes on environment, Ram writes on anything. In fact, my favorite Ram Guha book is actually on cricket. You know, Corner of Foreign Field, I think, is a brilliant book. I think as good as his other books are. Ram is an absolutely brilliant person, writes most elegantly, and I think the essays, I think the only person who comes close is Mukul Keswan. Now the point is that Mukul Keswan is low profile, stayed in India. Ram is all over. Yale में है, Princeton में है, Oxford में है, Cambridge में है, South Africa में है, Israel में है, Tel Aviv में है. One doesn't envy him because that's the kind of research which he brings to the And table. not only research, I think that Ram Guha is he's a very good speaker. It's so pleasurable listening to him. Speaking is another thing. Yeah. He is such an elegant essayist and writer. Yeah, I right. mean, I mean, he's such a good communicator in everything. What He Ram was saying, that communicates if you these. retire with a chamomile and a good book to read, Ram is always worth a reread in the night with a cup of chamomile or coffee or whatever is your poison. I don't even mind half a glass of wine and keep reading Ram. I mean, but to get back to the point you were making, there are people who make a lot more money. I mean, do you think Arundhati Ghosh is making less money? I mean, once you win a Booker Prize, I mean, you sit on a pile. Well, I'm not complaining. I made a reasonable amount of money on this book. I think that I must have. This is about how much? 15 years old. The name book. of this book was India the Cookbook. India the Cookbook. This is I want to jump off on this. No, but let me tell you the money question straight. Right. It is 15 years since this book was published. Even now, I get tax paid 2 to 3 lakhs a year in royalties. I'm not complaining. Twice a year. Twice a year. Every 6 months, a check for 1.5 lakhs bank transfer takes place. So if you calculate 15 into 3, I have made 45 lakhs on the deferred royalties. They paid me an advance of, I think, 16-17 lakh rupees for against royalties. The first year I made, I think, 50-60 lakh rupees of sales. Now the sales have gone down slow, but it's a steady thing. So I'm not complaining. I'm not complaining at all. So India the Cookbook, which clearly has made you a lot of money, Pushpesh. But one thing I wanted to jump off that, and I wanted to ask you, you've written a cookbook about Indian food. But what is Indian food? Is there any way to define it? Food. I make it very clear. Right. It's like the Brahma, which Adi Shankaracharya said, neti, 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 not this, not this, not this. So when you say Indian food, what are you talking about? Are we talking about the Punjabi northwest frontier, barra kebabs and Rogan Josh and things of that kind, or Makke di roti or saag or mahdi for most of the world is Indian food? No, or it is a form Mongolia. I mean, I have a thesis. I say that there are 3 things which are terrible about so-called Indian food. One is the tyranny of the tandoor. One is the myth of the Mongolia. The third is the curse of the curry. So you have a fish curry, mutton curry, egg curry, chicken curry, and nobody talks of a dampukht, kalia, or maybe something salan. We have forgotten that. Then the interesting part is this, that forget about this region also. You talk of Kashmir. So are we talking of the Muslim Vazwan or are we talking of the Pandit Vazwan? Both be meaty, but totally different. One eschews onion, other doesn't. We go down. You come to Bengal, where you come from partly. What are we talking about? Are we talking about Goti or Bengal? Are we talking about social class where you are a Bhadralok or you are somebody who stays and grown up in a basti? Are you a Marwadi who has spent 3 generations or 4 maybe in Bengal? One of my closest friends was Mr. Seksaria, Ashok Seksaria, friend, philosopher, guide, elder brother kind of mentor. His father was a treasurer and advisor of Mahatma Gandhi, and they stayed in Lord Sinha Road.
and right opposite Riddhi Siddhi and the fire brigade station just off Shakespeare Sarini. It's great fun to be with him, and he would take me, ये इस तेलिया के पास जाओ, यहाँ नेताजी एल्गिन रोड में खाते थे. He would take me to Lansdowne Road, where another distant cousin used to stay. He introduced me to the Marwadi nobility. He was the top Marwadi nobility himself. He stayed in the servant quarter of his own house because he was a socialist, committed socialist. And he would take me to Kachrapada, he would take me to Salt Lake, he would take me to North Bengal, he would take me to Lake Terrace. I thought that what food are we talking about? Are we talking about Bhadralok food? Are we talking of the middle class, upper middle class food? Are we talking of the anglicized Bhura Saab food? Are we talking of the Armenian food? Are we talking of the Jews who are there running the bakeries? Are we talking of the... So forget about Indian food. It's very difficult to even define Calcutta food. No, forget it. You go down south and you say Kerala food. So what is Kerala food? Is it a Malayali food? Is it a Suryani Syrian Christian food? It is a Mopla Muslim food. It is the Nambudri Brahman food. And North Kerala, South Kerala, Thrissur food, Palaghat. And the Palaghat food is the Palaghat Ayers, the Tambrams. But eating what the... And then are you a Hindu? Are you a Muslim? Are you rich? Are you poor? Do you eat pork? You don't eat pork? Do you eat beef? You don't eat beef? So Suryani Christians would be the ones, the Syrian Christians would be the ones who would eat pork, beef, everything. But then there would be Bene Israelis who would have kosher food of their own. So I do think that there is no such thing as Indian food. It is like a river system. Tributaries come and join it. Distributaries branch out of it. Right. And each confluence muddies the water a little. So take a dosa. तो अब आपका डोसा था, अब पनीर डोसा उसमें है, पालक डोसा उसमें है, कीमा डोसा उसमें है, एग डोसा उसमें है, एंड थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर अब शीरान्य डोसा है जिसमें कुछ और भी चीज़ें भरी जा सकती हैं. सो पोटेटोज केम प्रिज्यूमबली ओनली विद द पोर्चुगीज. तो उसके पहले बेचारे तमिल अय्यर, अयंगार, स्मार्ता क्या खाते थे? दे प्रॉब्ली एट कच्चा केले का मसाला इन दैट, या pumpkin. Or pumpkin. Pumpkin, yeah. I can't even think of the pumpkin. But kacha kela, I think I can manage. Why you don't like pumpkin? I love pumpkin. I love pumpkin. I love the Kashmiri pumpkin ka Rogan Josh. I like kumde ki sabzi in Banaras, which is served with chana and chachi's kachori, which was demolished day before yesterday with Pahalwan ki lassi. They have come up the next day, so it seems that there was a prefix match कि हम पहले सबकी दुकान उजाड़ रहे हैं, but nobody should say कि हमने हिंदुओं की दुकान नहीं उजाड़ी है, हमने बीच के सामने पहलवान की लस्सी भी उजाड़ दी, हमने चाची की दुकान भी उजाड़ दी, but next day जो मशहूर पहलवान लस्सी है बनारस में अब नहीं रही. नहीं है. तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदू वो तो आत्मा है ना, अजर अमर है, दोबारा हो गई. पहलवान की लस्सी एक दिन आपने डिमोलिश की, दूसरे दिन उसी जगह उसकी दुकान पर सामने दुकान आ गई. चाची की दुकान आपने एक दिन डिमोलिश की, उसके सामने उसकी दूसरे दिन दुकान आ गई. तो दिस आई थिंक इज अ WWF रेसलिंग मैचेस कि हमने दुकान तोड़ भी दी और नहीं भी तोड़ी और इकोनॉमिक और बची भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई हैव दिस फीलिंग दैट there's so much of a difference. Tell me something about this form Mughlai that you use. So do you think there's nothing called Mughlai food? No. I am a strong believer that there is no such thing as Mughlai food. There's no such thing as Mughlai food? No. It is a creation of cooks who wanted to curry favor with the British Rajas, British overlords, not Rajas, the equivalent of the new Rajas, Talukadar. Bada Sahibs. My theory is very easy to prove. Right. Look, Babur came to India when he was chased out of his fiefdom in Fargana. Came with some horse riders, had some accidental wins, had the Rajputs could not have a confederacy. He was very fond of fruits in Central Asia. No fruit matched his muskmelons. उसको तो आम भी पसंद नहीं आया. आम के बारे में उसका ग्रजिंग एडमिरेशन था कि एक आम खाने लायक है अगर मीठा हो जाए. हाँ, बाबरनामा है. वो तो खरबूजा और तरबूज के पीछे पड़ा हुआ. उसी के पीछे पड़ा रहता था. But the interesting part is this, that he had a son called Humayun. उस बेचारे की तो ऐसी तैसी कर दी थी शेरशाह सूर ने. वो अफगान आया और खदेड़ दिया उसको. वो आधी जिंदगी उसकी मतलब गुर्बत में बीती. लौट के हिंदुस्तान आया तो वो लबादी में उसका पैर लटपटाया या अफीम का पिनक थी, गिर के मर गया. He had no time for food. Akbar inherited the throne at the age of 13-14. His regent was Bahram Khan and he had his Navratans, but all this later. वो सूफी था, वो अपनी ट्रिप पे था, वो तो दीन इलाही, he wanted to become दीन इलाही, and I think he became vegetarian towards the end. That may be a myth put these days, but fair enough. 5 days a week he presumably was largely veg. veg. खाने का शौक नहीं था खास उसको. उसका लड़का जो जहांगीर था वो ससुरा शराबी था, वो दारू पी के मस्त रहता था. He drank himself to death, never spent any time in Delhi, was in Lahore or in Srinagar. नूरजहां उसको खुश रखती थी.
उसका बेटा था शाहजहां, who was more interested in procreating children than eating food. 14 बच्चे उसने पैदा किए, एक बीवी से, तो 14वें बच्चे के चाइल्ड बर्थ में बेचारी मुमताज़ महल मर गई, तो वो ताजमहल बन गया. That's another story. He was imprisoned by his son Aurangzeb. Could not eat what he wanted to eat. So वो बेचारा खाएगा क्या, उसके पैसे खर्च होते रहे ताजमहल बनाने में, लाल किला बनाने में, जामा मस्जिद बनवाने में, यहाँ भी आगरा में रिमॉडल किया. So let's not get into that. औरंगज़ेब कूढ़ा बैठा था, बचपन में सब कुछ करता था, मगर वो लड़ रहा था काबुल में. उसके भाईजान जो सपोज पैरागन ऑफ वर्च्यू दारा शिको, हु वाज एक्चुअली अ विलन ऑफ द पीस, वो डिवोचरी में लगा हुआ था कश्मीर में. वो परी महल चल रहा था, और वो संस्कृत का भी स्कॉलर था, वो ओशन ऑफ सूफिज्म भी लिख रहा था. बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट. नाउ दिस औरंगज़ेब स्पेंट 50 years of his life in Deccan from the age of 40 to 90 plus. खाने की फुर्सत नहीं थी, खिचड़ी खाता था, टोपियाँ सिला करता था, हार्ड कोर ऑर्थोडॉक्स मुसलमान स्पार्टन लाइफ लीड कर रहा था. तो कौन सा खाना खा रहे थे मुगल? उसके बाद किसी मुगल शहजादे की औकात नहीं थी कि वो अपने सिपाहियों को तनख्वाह दे सके. बहादुर शाह जफर, the great freedom fighter in 1857, was a reluctant freedom fighter. He was a pensioner puppet of the British. He could not even give khilwat or accept nazrana from his people. So you're saying if you actually took a Mughal and took him to Karim's, he would get shocked at the food that is being No, Karim would claim that he belongs to the Shahi Khandan of the... सही है ये, मतलब नहीं, ये fact check है. अगर मरीम रशीद ने जो डॉक्यूमेंट किया है कि ये जब शुरू किए थे 1913 में, तो एक खोमचे में आलू गोश्त और रोटियां बेचा करते थे. तो with no disrespect to him, his aloo gosht was very good. Aloo ka sal and rotis were very good. I mean, one thing is true that what is called Mughlai food in India or maybe Pakistan has got very little relation to Central Asian food where they came from. No, I would not go as far as that. You see, what happened is, what I am saying is that what Mughals ate was not what is passed off to us as Mughali food today. But to complete the story, what happened is, after 1857, all the good karigars went out from Delhi to Patiala, Rampur, Hyderabad, etc., where living was safer. Second interesting thing was this: the decline of Delhi had started much before Bahadur Shah Zafar. Attacks of Nadir Shah, वीराना था तो 100 साल उजड़ा हुआ था. हुजूर अनवर सिपाही के खाने के लिए लश्करी खाना बनता था, निहारी और कुलचे. अब आपको खाने को 5-star रेस्टोरेंट में मिलती है, होटल में शाही निहारी. अब ससुर शाही निहारी कहाँ से हो गई? It was a poor man's food. The other back story of the food it's is like saying शाही गोलगप्पे or something. It doesn't make any sense. तो मतलब कॉमन मैन का फूड है. तो नहीं, वो गोलगप्पे तब तक इजाद भी हुए थे कि नहीं हुए थे, मुश्किल है कहना. कि ये तो जब दिल्ली में चाट वाले आए तब उसकी अलग कहानी है, दिल्ली की चाट की अलग स्टोरी है. दैट स्टोरी अगेन इज, यू वांट टू डू अ बैक स्टोरी टू सेल योर फूड. आप कहते हैं कि हकीम साहब ने शाहजहां से कहा कि अरे आपने गलती कर दी, यहाँ पर ना, यहाँ का तो पानी इतना गंदा है जमुना का, पेट खराब हो जाता है, तो उसके लिए खाना पचाने के लिए उसमें मिर्च डालिए, और मिर्च लगती है, जबान जलती है, तो उसमें घी मिलाइए तो रोगन बनता है. अब आप मुझे एक बात बतलाइए, when there people staying in Delhi before the Shahjahanabad was built, दिल्ली 7 बार बसी, 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी. What about तुगलकाबाद? What about फिजोराबाद? What about जहाँपना? What about the present area where Basti Nizamuddin is there? So why what did people eat the filthy water, sewage water in Jamuna? No, they cremated people in Nigambodh Ghat and did not drink that water. There were bawlis, there were step wells, there were wells, they ate water. And clean water came, which Firuz Shah Tughlaq brought from the Jamna Nehar, which came, Nehre-Bahisht came to even चांदनी चौक. बेसिकली इट वाज दैट वाटर. सो मेरे ख्याल में ये सारी बैक स्टोरीज. अब आप मुझे एक बात बताइए, तो क्या शाहजहां इतना बड़ा गधा था कि उसने ये नई बस्ती बसाने के पहले ये नहीं सोचता कि यहाँ पानी कहाँ से आएगा, यहाँ लोग पीते के पियेंगे क्या? एंड इनफैक्ट ये जो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, आई रिमेंबर आई वाज इन लखनऊ वंस, एंड वहाँ ये लोग बहुत खटकते थे कि इसको बिरयानी बोलते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं ये तो पुलाव है. नहीं, वो भी बिरयानी होटल वालों ने नाम दिया है. बिरयानी नाम की कोई चीज़ लखनऊ में नहीं थी. लखनऊ में नहीं थी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी. इफ़ यू लुक एट इट इज़ लाइक दिस, व्हाट इज़ द कॉमन लैंग्वेज? द ईडियम इज़ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, यू आर डे ड्रीमिंग. कोई ख्याली बिरयानी तो नहीं पकाता ना. तो अब जो पुलाव था उसकी अगर लिस्टिंग आप देखिए, तो देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड बाय मुंशी फैजुद्दीन बिदाए ज़फ़र, The Last Banquet of Bahadur Shah Zafar. He lists about 18 or 19 pulavs. One of them is birinj birya pulav, fried rice pulav. So one of the pulav varieties was birinj birya pulav,
And Salma Hussain has done a brilliant book on what the Mughals ate and the Mughal Dastarkhan and the King's Table. Gourmet Award Prize winner. She's a very, very knowledgeable lady, keeper of Persian manuscripts in the museum, ITC consultant. She says that if the Persian biryani does not even use rice, वो तो रुमाली रोटी में लपेट के ज़मींदोज़ पका लेते हैं. But I would not go as far as to say वो जो बिरयानी लफ्ज़ का मतलब है, हम लोग अभी नॉर्मल हिंदी उर्दू में उसको भूना कहेंगे. जी बिल्कुल. मेरे ख्याल से वो बिरयानी मतलब भूनना होता है ना पर्शियन में. पर्शियन भूनना होता है. अब इनफैक्ट हमारे घर में बाय द वे फ्राइड प्याज को आज तक बिरयानी कहते हैं. बिरस्ता भी कहते हैं, मगर बिरयानी भी कहते हैं. फ्राइड रोस्टेड मींस बिरयानी है. बिल्कुल. अब दिक्कत ये है कि फिर आप कहेंगे सब बिरयानी चढ़ के सबके सर पे बोलने क्यों लगी. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड द लास्ट फ्लिकर ऑफ द ओरिएंटल कल्चर, गुज़िश्ता लखनऊ बाय अली अहमद सरूर. अब सरूर साहब भी बड़े मज़े के आदमी थे. वो खुद तो लखनऊ में कभी रहे नहीं. वो चले गए थे मटिया बुर्ज में खिदमत करने को वाजिद अली शाह के मरने के बाद. ज़िंदगी उनकी वहाँ भी थी. वो लखनऊ अखबार उर्दू में छापते थे. उन्होंने ये सारी थियरीज की कि सब लखनऊ वालों को तो बिरयानी को मालखोबा कहते थे, वो यखनी पुलाव खाते थे, विच इज़ ट्रू. But he is not an eyewitness of what Lucknow was eating in Nawabi period. Right. So what I'm saying is that there is always a hyperbole about Lucknow food. कि आपने बैक स्टोरी क्रिएट की है कि हमारे यहाँ तो जो बेनिश होकर शहजादा आता था वो लखनऊ में रहता था, यहाँ का जायका उसकी ज़ुबान पे चढ़ता था, उस बावर्ची को रकाबदार को दिल्ली ले जाता था और वही खाना वहाँ चलता था. The interesting part is this: then how did the Mughaliya food come into existence? When the British came, these out of power jagirdars, talukadars, they became revenue collectors. They wanted to please the overlord. तो अब वो अंग्रेज़ आदमी तो मिर्च मसाले वाला कौरमा खाता नहीं था, तो उसको आप पाते द फॉय ग्रा की तरह का मेल्ट इन द माउथ गलौटी कबाब खिलाते थे. उसकी बैक स्टोरी बन गई कि साहब एक नवाब साहब थे, बड़े डिबॉच थे. ही लॉस्ट हिज यूथ बिफोर ओल्ड एज, हिज टीथ केम आउट एंड ही कुड नॉट मैस्टिकेट एंड ही स्टार्टेड ईटिंग दिस कबाब. Somebody else would say a British lord came to please him. This kebab was created. Story is very simple. Near Lucknow there is a small town called Kakori. Wahan there is a dargah of a Sufi saint. From times immemorial, centuries old people from Dehat used to come there on ziyarat. उन सब के बुढ़ों के दांत नहीं होते थे, तो उनके लिए काकोरी कबाब वहाँ बनता था. वो तबरुख था, वो खाते थे, घर जाते थे. So all these back stories are created sometime in last quarter of the 20th century or a little before that. This is something I've realized when reading about Indian food. 99% is all a beautiful story. मुझे तो not even a beautiful story. Unfortunately, not everybody is as elegant a writer as Ram Guha. Not everybody is as elegant a writer as Veer Sanghvi. Right. I mean, who can play with words and who loves his food. And he writes about something which is well researched because he has his reputation in mind. आजकल क्या है कि आपने नेट पे जाके गार्बेज इन गार्बेज आउट जो मिला का आपने यू पॉन्टिफिकेट अबाउट बर्रा कबाब टू गलौटी कबाब टू टुंडा कबाब टू सखावत का कबाब टू रहीम के कुलचे टू whatever, you know. So I'll share with you something else. I'm working on a book called my personal memoir of food of Lucknow, like the book I have done on Delhi, from King's Table to street food. There's a very interesting discovery I made. 27% of Lucknow's population today, we have not had a census since 2011, is slum dwellers. And they are not all Muslims. They are Dalits and Yadavs and Ahirs and Gujars and people who belong to the rural hinterland. They don't eat kebabs. They don't eat kormas. And if they are Hindus, they are very worried about eating meat at all because वो pork तो नहीं हो सकता मुसलमान के यहाँ, मगर beef हो सकता है, भैंस हो सकती है. So what they eat is puri, kachori. They call puri kachori, which is bedvi, aloo ki tarkari, maybe parathas, maybe sabzi, maybe arhar ki dal. Now, interestingly, when you try to read legendary, iconic eateries, the oldest eatery is listed as established in 1975. Not even, it doesn't even meet the requirements of the heritage building. Right. 75 साल 100 साल तो पुरानी हो, ये तो आप 50 साल पुरानी चीज़ को कहना साहब इससे पहले. Another claimant on a influencer blogger writes, there is a shopkeeper which was 300 years old. Lucknow is not 300 years old. Aurangzeb died in 1707 and the first Subedar was after that. Right. And Nawab was much later.
So what are और we? पहले तो फैजाबाद में कैपिटल हुजूर फैजाबाद में बाद जो में लखनऊ गया। फैजाबाद की कैपिटल भी अकबर और औरंगजेब की डेथ के बाद की है। बात की तो हाउ कैन यू कंप्लीट 300 ईयर्स इनसे कि बन गया यहाँ खाना? वो तो हिंदुस्तानी एक हुनर है कि थोड़ा सा लंबा लंबा मारते हैं हम लोग, तो फेंकते हैं, तो वो तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने so I want to jump off from this. This is the slightly nice thing about the story we tell about food. But India also does a lot of politics over food. खाने को लेकर बहुत सियासत होता देखिए है। खाने से ज्यादा लेके मारामारी हो ही नहीं सकती ना। सी आई थिंक द food is something basic. If you don't have food, you can't survive. People say that food and sex are equally important. No, my theory is the problem is this, that food is more important than sex because it starts before your birth. When the child is in the womb of the mother is fed special food in all communities. पंजीरी खिलाई जाएगी, ये खिलाया जाएगा, वो खिलाया जाएगा। बच्चा पैदा होगा, उसका अन्नप्राशन होगा, when he will be given नवान्ना or something. When the man dies, it doesn't end. His funeral rites include food. And there is a verse in, I think, Katha Upanishad, which says, Nacha vittena tarpaniyo manushya. Man cannot be liberated from the cycle of rebirth by money alone. So it has to be food, pindadan. So there also is challo, there is funeral rites and khana. So my problem is that food is more basic and food relates to other people almost immediately. Sex तो आप पोस्ट प्यूबर्टी हार्मोन जब आएंगे तभी कुछ करने की हालत में होंगे। मतलब इफ यू आर अर्ली प्रिकॉशियस चाइल्ड 10-12 साल एंड यू आर ईटिंग 3 times a day. I don't think many people are having, I mean some people are having जो 2 3 जून times का a day. खाना भी खा रहे हैं वो 2 बार खा रहे हैं ना। सेक्स के लिए तो 2 बार के लिए इट विल नीड एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग लिबिडो एंड प्राइवेसी आई थिंक इज डिफिकल्ट। So you're saying that this creates very good conditions for politicians to jump no, in. not politicians to jump in. There always would be scarcity and there would always be wastage and adulteration. ये जो अमीर आदमी है, I mean I owe it to Mohammad Farooq, a chef from Lucknow, heritage chef from Lucknow, who told me, Guruji, he used to call me Guruji because Kalrao used to call me Guruji. He said, ये एक अच्छा खाना जो है ना फाइन डाइनिंग, रईसों के चौंचले हैं और गरीबों की रोटियां हैं। वी टेल देम कि घी में लगा है, ये बालाई का टुकड़ा तला हुआ है, ये हमने ये किया है। सो द थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ द गुड फूड इज फॉर द nobility or the royalty. It becomes aspirational for the masses. There are 2 totally different categories. There always is a politics, people are dying of hunger and starvation where others are gorging. Do you remember the Great Bengal famine? Of course. आदमी मार के उसके लिए हाथ फैला के बच्चे बेच रहा था। मार के जिसमें चावल बनता है वो पानी के लिए तरसता वो पानी के लिए तरसता था। And if I remember a famine which is not called famine but it's called a drought, and Saib has written that beautiful everybody loves a drought, Sainath P. Sainath. So I remember the drought in 1965 in Palamu when people were selling पेड़ की छाल खा रहे थे, चबा रहे थे, बच्चे बेच रहे थे। So the point is that we always have politics of food because of scarcity and plenty amongst scarcity. And it's very interesting, although India is still today is a scarce region for food. आप अगर देखिएगा पीडीएस में इतना पॉलिटिक्स हो रहा है कि अंडे मत दो, ये मत दो, ये तो it really hits India's health, right? No. The point is that I have another theory which I must share with you. I believe that majority of Indians are closet non-vegetarians. Like I landed in Ahmedabad. Right. My beard made me look neutral. I could be anybody. My taxi driver was a Muslim. He said, कहाँ लेके चलूँ? तो मैंने कहा कोई अच्छी खाने की जगह है, आप क्या खाएंगे? तो ऐसे कहीं अच्छा बड़े का मिलेगा? तो ही सेड आपको परहेज तो नहीं है? नहीं, मैंने कहा मुझे कोई परहेज नहीं, मैं सब कुछ खाता हूँ। तो ही सेड कि फिर मैं आपको लेके चलूँगा शाम को दिस प्लेस नियर सोफिया मॉस्क देयर, आपको लेके चलूँगा, पुराने शहर में बड़ा अच्छा खाना मिलता है। ये कौन सा शहर है? ये अहमदाबाद का पुराना हिस्सा शहर का, इज कॉल्ड मिर्ज़ापुर। Right. It's called not that Mirzapur, but this Mirzapur. Not the TV show. No, but almost as deadly. Right. Right next to Xavier's school, and you have this area. You walk in, and you get कीमे का समोसा. जिसको वो कीमे का समोसा नहीं कहते हैं, वो उसको कुछ सामान कहते हैं। कीमे के पकौड़े बहुत अच्छे, all made from beef. But then when we went down to eat in a place, I wanted to eat nalli nihari. Cannot be beef, must be buff. Of course. The भैंस का गोश्त होगा। अरे सब मौसी तो हो गई ना, माँ नहीं हुई तो। मतलब है तो हिंदुस्तानी थी ना। देखिए हिंदुस्तान में नहीं, क्राइम कमिट कर रहे हैं आप। नहीं, आप देखिए मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में बीफ इज लीगली कंज्यूम्ड इन स्टेट्स ऑफ केरला एंड इन नॉर्थ ईस्ट, एंड इट इज कंज्यूम्ड एज बीफ, नॉट एज बफ। इवन इन बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो छोड़िए इन सब बातों को,
But let's get into, India is one of the largest beef exporters after Argentina, and that's not buff. But let's get back to what we are doing. We went to a shop where I wanted to eat a gravy dish. यार वो नली निहारी ले आओ. He said वो तो मुश्किल है. यहाँ चिकन मिलता है. I said what's the problem? इतनी दूर घुमा फिरा के लाए हैं. तो the owner of the shop told me आप उस टेबल पे चले जाइए, which was the end of the thing. घुमा के चेयर उस तरफ को मुँह कर दीजिए. एक लड़का फिर प्लास्टिक की थैली में भर के लिए मेरे सामने वाली दुकान से ले आया. मैंने कहा इतना तमाशा क्यों है? उसने कहा पीछे ऐसा लग रहा है ड्रग्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है. नहीं तो वहाँ उसमें मज़ा ये था कि वहाँ जितने लोग बैठे थे उन्होंने टीके लगा रखे थे. आई थिंक इट वाज अ ट्यूसडे और समथिंग. वो कुक्कड़ का लेग चाँप रहे थे बड़े मज़े में. एंड आफ्टर दैट बिफोर गोइंग होम आई सब प्रिज्यूम दे वर ईटिंग चाय की पत्ती, अमरूद, टू और मे बी इवन स्मोक एंड पान, लेसर इविल, और घर में किसी को पता नहीं चले. सो दे सेड कि अगर इनको ये पता चल गया कि यहाँ बड़ा आता है तो ये मुर्गा खाने नहीं आएंगे, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा. So you have this. So you're saying there are many people in India who would present themselves as vegetarians to their families, but secretly you're saying they No, eating not meat. secretly. They will say कि हम मंगल को नहीं खाएंगे, हम पितृपक्ष में नहीं खाएंगे, हमारे घर में मीट नहीं पकता है, मगर बाहर हमें कोई एतराज़ नहीं है. हम बीफ नहीं खाएंगे मगर हम मटन खा लेंगे. और फिर उसमें बड़ा झगड़ा होता है. हम हलाल का नहीं खाएंगे, हम झटके का खाएंगे. मुसलमान कहेगा हम झटके का नहीं खाएंगे, हलाल का खाएंगे. It makes life miserable for a person who's an honest omnivore. I mean, the kind of, but this politics did not start with BJP. Politics did not start with, I will take you back to Mahabharata. It's very old. No, Mahabharata. There is a brilliant conversation between a Chandal, outcast outside the pale of the forecast, and Vishwamitra, the royal rishi. It was a time of famine. Vishwamitra was very hungry. He was dying of hunger. He smelled some food, some meat, some rotting meat. He went to the house, and this house was a Chandal's house. It was a dog rotting. He pulled the leg, dead dog, and wanted to eat. Chandal woke up, recognized Vishwamitra, said, "What is wrong with you? You are such a noble rishi. You are committing theft. You are eating it from a Chandal's house. You are eating carrion. You are eating a dead dog." Then the conversation is brilliant. Vishwamitra tells him, "I am a rishi. मेरे भीतर तप की फायर है. Any sin I commit is burnt in that तप की fire." He is reluctant to do that. Chandal is also a learned Chandal. He says, "No, but you see, you are going to lose all the virtue which you had." He said, "No, in the dharma there is something called apad dharma. In times of an emergency, you can forget the norms and do what is enough to sustain your life." Then he lectures the Chandal. "You are a Chandal, a carrion keeper. I am basically, society needs me more. So I must sustain myself in times of famine and eat whatever is possible." The story is a long one. I will not bore you to death with that. But then it says that Vishwamitra takes the dead dog, But I purifies. think it shows, how caste norms can be easily bent by an upper caste. Of course, yes. Like, it's very easy to do, right? Because the law is given by a Yeah, Brahmin. yeah. Or poor Vishwamitra never could become a Brahmarshi. He could ultimately be a Rajarshi. But interesting part is this, that the story says that Vishwamitra took the carcass of the dog, purified it, and ate it after giving due share to Pitars and Devtas and so on. But consumed and lived happily ever after of this thing. In fact, this thing, casting that you're saying, there is this thing called Sanskritization, right? Where if a caste wants to quote unquote rise up the ladder, they'll become vegetarian. That's what, no, they might become again closet vegetarians. Closet vegetarian, but at least present to the world as vegetarian. No, it's very interesting. This gentleman who's written on Dalit cuisines of Marathwada recently. It's a lovely book, yeah. Oh, brilliant book. Talking to him is even more interesting because he says, "I am a Hindu." Publicly. "I eat beef. Right. I am not a Muslim. Right. I eat pork. I am not a Christian. I am a Hindu. I eat these things only because you did not allow me to eat anything else. My sheer poverty, I was eating carcass and offals." And then he describes this. I think the politics of food is basically A, caste, B, class, C, tradition, D, the business of big food. आज आप कहते हैं देसी घी में पका है. Have you ever heard anybody say ये घी में पका है? क्या मुझे समझ में देसी घी क्यों बोलते हैं? स्पेशली दिल्ली नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं. विदेशी घी क्या होता है? Because during the war years, Right. there was shortage of ghee and margarine came, which was vanaspati oil. Right. So vegetable oils were hydrogenated to look like ghee. So that was उनमें originally फर्क करने के लिए
देसी घी लगा। and Videshi ghee. So that is also a politics. Vanaspati meant could be any ghee. Ghee Vanaspati could not be a ghee. Vanaspati could be a hydrogenated, frozen, look-alike of ghee, vegetable oils. मगर उससे फर्क करने के लिए उसको ओरिजिनल घी को देसी घी बोला गया। देसी घी कहा गया है. So these are the politics. Now you see the big business of food. Since globalization, economic liberalization, you have an agreement with various countries कि हम आपसे fruit लेंगे, हम आपसे vegetable लेंगे, हम आपसे fish लेंगे. New Zealand lamb comes here and barra kebab is made of that. Why would you like to eat a kebab made of New Zealand lamb जिसका carcass 6 महीने से ship में चल के आया है, frozen है? Why should you be eating a salmon which is coming from Norwegian waters, where the Norwegian fisheries minister was so crooked and had a conflict of interest that it's not allowed in European markets, in EU markets? Why would you be eating fruit coming from Australia or Sentosa plums from USA? When you have so much growing around here. So much growing around here. I want to jump on one point that you said when you said that the eating of the offal, about that Yes. Dalit kitchens of Marathwada. One of the most interesting things when Indians see Chinese food, for example, एक stereotype है कि अच्छा वो लोग कुछ भी खा लेंगे, जैसे चिकन फीट चाइना में लोग खाते हैं, मगर मैंने देखा है इंडिया में भी लोग चिकन फीट खाते हैं, सब खाते हैं हम लोग। यही है कि हमारे में वो एक कास्ट और तबके का नहीं, देखिए एक कैटेगराइजेशन और रीजन, और चाइना में सब लोग सब खाते नहीं, हैं, और रीजन मतलब वहाँ के नहीं, चाइना में सब लोग सब खाते हैं. आई वुड नॉट बी एबल टू जनरलाइज, ऑल्दो आई हैव ईटन इन चाइना इन डिफरेंट रीजन्स. माय प्रॉब्लम इज दैट यू टेक समबडी इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंगिंग टू द अपर कास्ट, upper class, they eat silkworms, slightly stir-fried silkworms. Raghav would know what brilliant thing. Raghav is a producer, by the way. He's been mentioned like thrice on the show already. Right. No, the problem is that I think we don't know enough about foods from the fringes. You go to Chhattisgarh, you have something called chapad chutney, made of yellow ants and red ants. But I would say, Pushpi ji, it's not only fringes. दिल्ली में chicken feet खाया जाता है. नहीं, chicken feet मतलब एकदम सेंटर में. हुजूर, chicken feet तो mainline खाना हुआ ना. मगर I'm talking to you आप insects. हिंदुस्तानी से पूछिए, वो कहेगा चिकन फीट तो चाइनीज खाना है. नहीं. हिंदुस्तानी खाना है चिकन फीट. चिकन फीट तो देखिए हिंदुस्तानी खाना है. मैंने देखा है सब्जियों में वो लोग मिक्स करके डाल देते हैं. बड़ा मजा आता है. मगर अगर आप नहीं, मेरा ये मानना है जो पाए का सूप है, वो टोटर से ही तो बनेगा ना. मगर my problem is not murgi. My problem is when you start eating insect, because you say the Chinese eat anything which crawls, they eat anything which flies except aeroplane, they eat anything which swims except submarine, and it has 4 legs besides the table. That's not the point. My point is that we do not even know the coastal areas where pohe, which is quintessential vegetarian breakfast, has dried shrimps. आप किसी से कहिए अरे वाह क्या मजा. कहाँ मिलता है ये? गुजरात में? नहीं, गुजरात तो लाहौल बिला हुकूमत ऐसी बात नहीं करिए, लानत भेजिए. मगर थोड़ा नीचे चले जाइए, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में, कोंकण वाले इलाके में. That sounds delicious. पोहा with dried shrimp. It is. और पोहा कम कर दीजिए. शुटकी कहते हैं बंगाली में. पोहा कम कर दीजिए और उसमें ड्राइड ये श्रिम्प्स डाल दीजिए. क्या मजा. हाई प्रोटीन मील ऑल्सो. हाई प्रोटीन मील क्या मजा आता है. पोहा जाने दीजिए, वो चूड़ा मटर के बदले आप मटर छोड़िए, चूड़ा डालिए, चूड़े में मिला दीजिए. मैं केरला से लेके आया स्पाइस ड्राइड श्रिम्प्स and I had that with my chuda. I thought it was brilliant. It was a brilliant नाश्ता. गुजरात में भी हमारा एक रिपोर्टर गया था गुजरात कलेक्शन कवर करने के लिए, and he spoke to the fishermen for a story. It's still on the Scroll website. He had such good fish curries over there. देखिए होगा क्या, हम गुजराती फिश करी कोई सोचेगा नहीं. गुजरात फिश करी सीन टू बी बंगाली, केरला. क्यों नहीं सोचेंगे? गुजरात has a long coastline. Longest coastline. And Gujarat before the bifurcation with Maharashtra was. Maharashtra and Gujarat was Bombay presidency. Daman and Diu was ruled by the French, but the French of a different variety, not the Pondicherry variety. And why do we forget the royal families? They ate everything. Daman and Diu was, I think, Portuguese. Daman and Diu were Portuguese, मगर उसमें एक नगर हवेली वगैरह में एक फ्रेंच कनेक्शन भी था कमाई में. तो वो उनका खाने में था. और उसके अलावा जो कोस्टलाइन थी, जो राजा रजवाड़े थे, वो तो सब खाते थे. बड़ौदा वाले भी खाते थे. मगर एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया कि गुजराती फूड मतलब वेजिटेरियन फूड, ढोकला वगैरह, जो कि है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हैव यू एवर हैड इडलीज फिल्ड विद प्रॉन्स? बालचाओ. Oh, no, I haven't. This great man who writes a novel, a great cartoonist Ravi Shankar, who edits the New Indian Express, once called me home to eat and treated me to idlis which beat the Kanjivaram vegetarian idlis hollow. अच्छी खासी इडली थी,
उसमें बाइट कीजिए तो भीतर प्रॉन चाव आता है, प्रॉन बाल चाव आता था गोवा का, क्या मज़ा था। यू डिडंट नीड चटनी, यू डिडंट नीड सांभर, यू डिडंट नीड एनी मसाला। आपने ये जो अभी मतलब मराठवाड़ा किचन का जिक्र किया, दिस मैन प्राउडली सेड आई ईट बीफ, आई ईट पोक। वन थिंग दैट आई वांटेड टू जंप अप पुष्पेश जी, वन थिंग आई हैव सीन फॉर एग्जांपल, जब लोग नेपाल जाते हैं तो वहाँ तो हिंदू ओपनली भैंस का गोश्त खाते हैं। नहीं देखिए, नेपाल भी बड़ा गड़बड़ है। आप जब हिंदुस्तान और यहाँ का फर्क कैसे हुआ है? माफ कीजिएगा, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन एन एरिया इन उत्तराखंड व्हिच शेयर्स अ बॉर्डर विद नेपाल, द काली कुमाऊं रीजन, द ईस्टर्न नेपाल एंड ईस्टर्न कुमाऊं एंड वेस्टर्न नेपाल मर्ज, ओनली अ रिवर डिवाइड्स इट, द काली नदी। We tend to think of Nepal as one place. Nepal has greater diversity than, arguably, comparison in size and population than India. There is mountain Nepal, there is valleys Nepal, there is eastern Nepal, there is western Nepal, there is Kshetris, there are Bahuns, there are tribes like Sherpas and Monpas, there are Nevads, there are Pre-Malla, there are Gorkhas. हमारे तो सारे गोरखा हैं, तो उनके खाने में इतना फर्क है। There is a brilliant cookbook written by a lady. But Gorkhas also eat. Gorkhas do eat buff, right? Gorkhas eat buff exceptionally when they give it as a bali in a Kalika temple. Right. तभी खाते हैं। हाँ, बट जो निवाड़ है वो तो सब कुछ खाते हैं, ऑफल्स खाते हैं, पोर्क खाते हैं, पोर्क रेज करते हैं, बफ खाते हैं। और वो सबसे फेमस नेपाली क्यूजिन है, नेवाड़ी हाँ, नेवाड़ी क्यूजिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट नेपाल हैज आर्ग्यूबली 20 different kinds of cuisines. So there is this lady called Rohini Rana. She is a princess of Avagadh. At the age of 18, she was married to the Junks, who were the prime ministers and commander-in-chiefs. Her father-in-law and her husband both ended up as commander-in-chiefs of the Royal Nepal Army and the Republican Nepal Army. But the interesting part is this, as part of her husband's duty, she covered Nepal all over. And she's an Indian princess, but she's done a brilliant cookbook on cuisine of palaces in Nepal and cuisine of commoners in Nepal. It is mind-blowing. It gives you so much variety. जो आपने बफ खाते हैं कहा, वो खाते हैं, मगर ये फर्क कैसे? जैसे हिंदुस्तान में बफ हैज बिकम अ कोट एंड कोट मुस्लिम मीट। नॉट ओनली मुस्लिम मीट, एक्चुअली इट वाज मतलब इन पब्लिक। मैं आपसे उसका बताऊं, इट इज पुअर मैन्स मीट। अगर आप लखनऊ में जाए तो मुसलमान भी दो तरह के ना, अशरफ मुसलमान है जो बफ नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, वो तो मटन खाएगा, वो सिर्फ मटन खाएगा, मटन खाएगा, राइट, मटन खाएगा। देयर इज अ क्लास एलिमेंट आल्सो और उस वेरी मच। मटन में भी वो दस्ती खाएगा, वो पुट खाएगा, वो सीना खाएगा, वो गर्दन खाएगा, जो बड़े का गोश्त है, जो अब बड़े में सब इतनी बड़ी तो हड्डी होगी, और उसकी निहारी में तो बर्फी कटी होगी। तो यू नो is when you eat offals, there is also reverse snobbery. A rich man also like to eat what the poor man eats once in a while. कि आप मगज खाएंगे, आप कलेजी का रायता खाएंगे, आप चकेना खाएंगे। तो यू नो जैसे हॉर्स कास्ट में आप अगर 700 रुपए का पास्ता मिलेगा, बहुत जगह दरवाजा टूटा हुआ है बाथरूम का, जस्ट टू शो कि एक वोक सॉर्ट ऑफ यू नो हिपस्टर सॉर्ट ऑफ वाइब लाने के लिए कि हम लोग गरीब खाने में खा रहे हैं। इट इज बेसिकली एन एटमॉस्फेरिक्स, यू पे फॉर द एम्बियंस एंड यू डोंट पे फॉर द फूड। वंस इन अ व्हाइल रिच पीपल लाइक टू कॉस्प्ले एज पुअर पीपल। हाँ, वो रोल प्ले है, रोल प्ले। और ये स्नॉबरी भी है। आपने ये जो बलि प्रथा वाली बात कही इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं इंटरनेट पे देखते रहता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज हु से कि like the way Shao Patella said that my food is Hindu food, they will say बलि प्रथा is core Hindu practice. It is. और जबकि आजकल थोड़ा सा लोग कह रहे कि हिंदू नहीं है वो। देखिए हिंदू, this is all that vegetarianism. The problem is the distinction made between Hinduism and Hindutva. Right. Hindutva is a political discourse. Right. Hinduism is a way of life, as Justice Verma said in Supreme Court. Right. And you come from a place where बलि प्रथा is very major उत्तराखंड, right? बिल्कुल। अब तो आजकल उसमें पर्दा लग गया है ना, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद। यू कांट डू इट इन पब्लिक। ने बंद कर दिया बलि। नहीं, वैसे हाई कोर्ट ने जो बलि बंद नहीं किया है, यू कांट डू इट इन पब्लिक व्यू, बट दैट वाज ऑलवेज डन। जब बलि दी जाती थी तो काली की आंखों के सामने एक पर्दा लगा दिया जाता था। बट माई प्रॉब्लम इज नॉट दैट, माई प्रॉब्लम इज व्हाट इज हिंदुइज्म? आर यू अ वर्शिपर ऑफ विष्णु, शिव, काली, विच अवतार ऑफ विष्णु? आर यू अ वर्शिपर ऑफ भैरव, एंड not an incarnation but a form manifestation of Shiva, who is given a prasad of meat and दारू? वो तो कालीघाट में भी होता है, कलकत्ता में, मेरे शहर में कालीघाट में भी होता है। वहाँ उसका मांस प्रसाद की तरह दिया जाता है। और अब उसका आपने और बिना लहसुन के पकाया जाता है, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद है। और उसमें कई लोग हैं जो अपना दे कैरी टू फार कि अब सब हम तो वैष्णवी बलि करते हैं, तो पीताम्बर देवी का मंदिर है नियर ओरछा, वहाँ बलि उसकी देते हैं, कुष्मांड की, कद्दू की।
कद्दू की because बलि they're देते हैं। supposed to be representing that. अच्छा, तो मगर एक जमाने में तो जानवर की बलि देती होगी, हाँ, वो उसको रिप्लेस कर दिया बिल्कुल, कद्दू के एक साथ। जमाने में तो नर बलि दी जाती कद्दू है, मतलब क्या, पंपकिन? pumpkin, ripe एक pumpkin. जमाने में नर बलि भी दी जाती होगी। नहीं, because they say that if you read the books which have been very well researched by D.N. Jha, who proves conclusively that a calf was slaughtered for a favored guest in Vedic times. He had his face blackened, his books were banned. These days he would have been lynched. But there are people who have shown archaeological evidence that in Indus Valley civilization there was butchery. Animals were slaughtered for not the table but for the thali. We presumably did not eat in table. And they presumably, much before Moti Mahal claims कि तंदूरी chicken उन्होंने इजाद किया, somebody had, the clay ovens are there in Indus Valley civilization and chicken has been slaughtered. So obviously it was वो not लोग भी rocket तंदूरी science to chicken put a खाते murgi in the tandoor and bring it out. One thing I want to jump off, we've discussed a lot of identity and food, always fascinating. But one thing that I always feel is less discussed when it comes to identity is gender in food. क्योंकि वो घर की बात हो जाती है, डोमेस्टिक बात हो नहीं, जाती वो घर की बात नहीं होती. It is a patriarchy. Most Indians do not recognize that they are male chauvinist pigs and patriarchs. I will give you two examples. The Kayas families had a food which was meaty. The male members in the family Ate the ate meat. Right. The female members were vegetarians. They cooked for their husbands. Right. The interesting Wow. thing is that you take the widows in Bengal, So they were vegetarian, but they cooked meat for their husbands. husbands. Kayas. Unless they were very anglicized and it was like Madhur Jafri or Mrs. Sheila Dhar, Right. the civil lines Mathurs who Right, could indulge in. No, but let's take another example. Take Jorasako. Take the Tagore family. Tagore family. How did they lose caste? Because they had smelt beef being cooked somewhere. Right. And then the Brahmos came. That's how strict it was. Of course, then the Brahmos came. But ladies did not eat meat even then. When they had lost caste and they had become Brahmos. Take a dish like dalar dhoka. Dalet dhoka. Dalar dhoka. So dhoka kya tha? It was a mock meat cooked in meat masalas for widows who wanted to take meat after the husband had gone. So for the people watching, dhoka is basically like a dal ka cake. It's a dried dal cake. But Which, the word dhoka is right, which means it's a trick, mock meat. a trick or treat. Right. हमने आपको ट्रिक कर दिया. उसमें क्या था? You remember Sharat Chandra Chatterjee's novels? The about to be become widow is asking her permit me to eat Ilij Mach after you are dead. I should at least be able to eat Ilij Mach after death. I think, but this is actually a very sad, and I think it's No, I'll tell represented you- in I'll many tell you- novels that no, I'll tell you- widows have to give up all. No, I'm not talking of widows. I'm talking of married women All with Amish. children. Haan. In Uttarakhand, where I grew up in a village, the women would get the leftovers. You know, everybody ate everything. But the good pieces went to the male, the sons. The women in the house got skin, offals. This happens even in fishery Bengalis. Women very Of course. often get the tail piece, which has the most kata and very little meat. पेटी नहीं मिलेगा. And पेटी मिलेगा मर्दों को. बिल्कुल. मतलब तो that this is an और अगर मच्छर मून खाने वाला भी झोल में शौकीन आदमी पुरुष होगा तो वही उठा के खाएगा. So I think, you know, there is this great other reality of Indian society that we are male chauvinist pigs. We are very patriarchal people and we don't complain about it. in fact it starts very early. Sometimes even young kids, the boy is given better food than his sister. Right? If the girl is lucky to have been born, otherwise there would be a female infanticide. So I think this is also part of politics of food, but it is more than politics of food. Is the gender bias, you know, बहुत गहराई की बात है, मतलब पूरा घर के अंदर किचन के अंदर जाके कि only the यहाँ जो sun सियासत हो रहा है। the sun can take you to liberation from लड़की को ही narka. मिलेगा। और लड़की कोई नहीं, लड़की नहीं. I mean, even the Supreme Court judgments on co-parcenary property, etc., are not always progressive. My favorite but completely untested gender theory is that the north is more patriarchal because it has roti. रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत काम है, और east and south में is less patriarchal because there is rice. I would not hasten to generalize so much because No, this is, I don't mean it I mean, literally. take Kerala, Haan. which is supposed to be a matriarchal place, where the property passes on to a tradition called Aliya Santana. But who ultimately manages the property? It is the wife's brother. It is a male who has control of money, field, dirty work. The lady might be owner in theory, and it passes But on. the practical ownership is very often in the hands of a man. That is why systems like marrying a mama's son came up in some places in Karnataka, because the male would not like to leave control.
So I think it's very much there in South as well. प्रॉपर्टी का खेला है जस्ट सो दैट वो बिल्कुल फैमिली के बाहर प्रॉपर्टी ना जाए. बिल्कुल ना जाए. We were having a bit of a chat yesterday, and you said you're writing a monograph on the Brahmin food of Uttarakhand. Yes, no, not Brahmin food of Uttarakhand. A Brahmin food of India. Brahmin foods of India. Now, Dalit food is politically correct. Caste food is politically correct. Your son did not like you writing My son, on it. no. My son said you will ultimately get into trouble and get bashed up. So I said at my age I can risk anything. You're ready to risk getting bashed. No, I don't mind, but I think it is dishonest not to write about a community which gives the law कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे और घर में आप क्या खा रहे हैं. And let me give you a very small sampler of that. How many Brahmin communities can you, on the tip of your finger, count? North India, Kanyakumj. Then you have Malviyas. Then you have Saryu Parin. Then you have Gauds. Then you have in Bengal the Bengali Brahmins. Then you have Maithil Brahmins in Bihar. Then you have Bhojpuri, Bhagalpuri Brahmins. Then you have people who are Kashmiri Brahmins. So is there any commonality to No, these I'll come to that. Then you have Saraswat Brahmins of Kashmir, Saraswat Brahmins of the coastal area in Goa and Karnataka and so on, Deshastha in Maharashtra. Then you have the Iyer, Iyengar and Smarta in Tamil Nadu. Then you have Nambudris in Kerala. Now you see 15, 16 major communities within which there are sub-branches, jatis, upjatis, gotras, etc. And each one of them has a different food tradition. Yeah, Chaubes from Braj area, Mathura. Right. So they have settled in Jharkhand and Chhattisgarh 5 generations ago. They are Bihari Brahmins or Chaubes. Again, they have intermarried. So they are Ojas, Upadhyayas, Avadjhao. They are Maithil Brahmins. They marry into Mishras. Saryu Parin and God each would claim that we are better because we have done this. There would be Chitpavans purified by the fire ritual. So you have Brahmins who have a hierarchy. And there are stupid Brahmins who don't even eat what their daughter-in-law cooks because it's nice to bring it to marry and for sex for the son, but not good enough to cook. And how do some Brahmins eat meat, like Bengali Brahmins and Kashmiri Brahmins? Because they have a tradition of Shakta Puja, Shakti Puja, Bali. So they, and if you are a coastal person, you eat fish in any case. तो जैसे यूपी में शाक्त ट्रेडिशन नहीं है, वो नहीं, सारे वेजिटेरियन है. यूपी में है, यूपी में शाक्त ट्रेडिशन है. यहाँ पर गोश्त खाते हैं ब्राह्मण? बिल्कुल खाते हैं. My mother's clan was a Kanyakumj clan which came from the plains of UP to Uttarakhand, but they were Shakta, they were Kali Pujas and they ate that. बट यहाँ तो नहीं, मैं आपको quite rare, right? In देखिए, UP मैं and all. आपसे फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि ब्राह्मण would be reluctant to say that he is not the holiest of the holy, direct descendant of the gods, purest of the pure. वो कहने की बात है एक तरीके कहने से. की बात है. But like coming back to you, so I can see where your son is coming from to some extent. If you can, I don't know him at all from Adam, but I think what maybe could be one issue is that Brahmin food already has so much prominence. It is the Brahmins do not hegemonic food. This right? again is a myth. Brahmins is too many provinces. आप कोई भी कहानी ले लीजिए. How does the story begin? There was a poor Brahmin. आपने कोई कहानी ऐसे शुरू होती सुन देखिए, एक बड़ा अमीर ब्राह्मण था. But ये एक तरीके का मिथ है ना. मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि ब्राह्मण की नॉलेज, ब्राह्मण का riches, ब्राह्मण का एक्सेस. Take the civil list. Make the civil list of how many Brahmins were in ICS. You can't even count them on the fingers of one hand. Take the Kayas. How many of them are there? Dozens of Kayas. कायस्थ अपने को ब्राह्मण ही बोलते हैं. नहीं, कायस्थ अपने को ब्राह्मण नहीं होते, वो कायस्थ होते हैं. वो they are a Sankar caste, an alloy caste. But we'll not get into that. We'll not get into origins of caste. मगर मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि how many Kayas are in civil service? Even ICS and IAS and IPS. And how many Brahmins are there? What are we talking about? Now with reservations, how many Dalits get into services? How many OBCs get into services? This myth of the Brahmin... मगर एक hegemony तो है ना. Brahmin culture is seen to be very often quote unquote Indian culture. देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ. आप किसको इंडियन कल्चर कह रहे हैं? I was born accidentally by birth in a Brahmin family. I lost my caste long time back because my father was a doctor who had lost his caste. My Nana had lost his caste because he was gone to England and disinherited by his father, who was a very orthodox Brahmin, a classmate of Madan Mohan Malviya in BHU. So I know firsthand that in my family, people have married Muslims, people have married tribals, people have married Dalits and lived happily ever after. But my personal experience is not anecdotal evidence. So many people have done that.
this young man we have mentioned already too many times in the program. His father is from Punjab, his mother from the Khasi tribe in Meghalaya Hills. Enough number of people are there who have lived like that. So what India are we talking about? Take the population. Again we are stuck because our last census was to, जो वेजिटेरियन फूड लोग कहते ही नहीं है वेजिटेरियन, क्यों नहीं कहते हैं? मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, because we have a pride in saying that कि vegetarian food is noble food, सात्विक food. ये ब्राह्मणिज्म हुआ ना, ब्राह्मण कल्चर का. ये ब्राह्मण नहीं हुआ ना. मैं आपसे जो what I'm arguing with you very persistently is what is the tribal population in India? वो कुछ जो क्या परसेंटेज है, जितना हम 15-16% तो होगा ना. दलित को हम कितना दे रहे हैं, उनका कितना है? बट पॉपुलेशन से गिनती थोड़ी ना होती है. नहीं, तब तो ब्राह्मण से 2-3% है. ट्राइबल का क्या कॉन्टेक्ट ब्राह्मण से था? इफ यू आर इन नॉर्थ ईस्ट, इफ यू आर इन तोड़ा लैंड, इफ यू आर इन भीलवाड़ा, व्हाट कॉन्टेक्ट डिड यू हैव विद अ ब्राह्मण? 12% इज शेड्यूल कास्ट. जो साऊ पटोले उनके अपने ब्राह्मण थे, उनके हमारे ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं था. 14-15% मुसलमान थे, 2% क्रिश्चियंस थे, 2% सिख्स थे. विल नॉट गेट इनटू माइनॉरिटीज. इनको अगर आप एड अप कर देंगे तो वेयर इज द ब्राह्मणिक, ये दिस अगेन इज बीट द ब्राह्मण एंड से ब्राह्मण्स आर नॉट एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल गिल्ट. बट इन मॉडर्न टाइम्स, सिंस अर्बनाइजेशन, द ब्राह्मणिक होल्ड ऑन द इंडियन माइंड हैज बीन नॉट देयर एट ऑल. हु इज बॉदर्ड अबाउट दैट? तो आपको क्या लगता है, जो जैसे आप ही ने खुद कहा कि पीपल प्रेजेंट देमसेल्व्स एज वेजिटेरियन, right? There are many spaces in India which are vegetarian. You can't bring meat in. Look. इसका नहीं, but इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स ये है कि आपकी कमीज साफ है, आपकी टी शर्ट सफ़ेद है. Would you like it stained all over the place? So if you can project an image that I'm a nice, pure, clean person. But cleanliness का आइडिया कहाँ से आ रहा है? ये आइडिया हर कुक के पास है. वो मारवाड़ी भी हो सकता. Have you ever read a book by Devyani Cherian, a Princeton PhD? Who says that the Marwadis all over the country are far more puritanical about food than the Brahmins are. No doubt about it. तो वो क्यों है? Because see, the argument works one step later. अगर in fact in Calcutta, Marwadis are far more puritanical than the Brahmins. No, local they are Brahmins. even more puritanical in Nagaland. Right. The argument for that is that if you are a pure person, you probably are honest in your dealings. There is no connection. There is no connection necessarily. But isn't this connection between purity and food? अच्छा, आप शराब पीते हैं? आप कितने लोगों से कहते हैं मैं खोल के शराब पीता हूँ, बड़ा मजा आता है शराब पीने में? बिकॉज शराब इज सपोज्ड टू बी बैड. बट ये भी तो इंडियन कल्चर है ना. फॉरेन में जाइएगा तो लोग खुल कर कहते हैं शराब हम पीते हैं. नहीं, उनके यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे कॉलेज के आसपास इतने पब्स हैं. नहीं, उनके कॉलेज के आप तो हमारे यहाँ भी कोई कसर तो है नहीं ना. बट हम लोग ओपनली नहीं कहेंगे क्योंकि शराब भी एक तरीके से इट्स अगेन आई थिंक मे बी इट कम्स फ्रॉम द सेम सोर्स. शराब इज सपोज्ड टू बी. ब्राह्मणों को मना है. ब्राह्मणों को कहाँ मना है? वो तो वो सोमरस खींचते थे, वो सोना खींचते थे. आप क्या बात कर रहे हैं? इफ सोमरस वाज नॉट एन इंटॉक्सिकेंट, द्राक्षासा वाज नॉट एन इंटॉक्सिकेंट, व्हाट इज एन आसव? व्हाट इज एन अरिष्ट? You go to Ayurveda. But traditionally, isn't alcohol banned for at least North Indian Brahmins? It was not. It was not. Not was meat. There was a brilliant sentence by in Vedas, Vediki hinsa, hinsa na bhavati, which was lampooned by Bharatendra Harishchandra, who was not a Brahmin incidentally. He was a Baniya family from Banaras. So सीधी बात ये है कि आपका हिपोक्रेसी है. आपका हिपोक्रेसी का ताना बाना है, जिसको अनफॉर्चुनेटली मे आई बी फॉरगिवन फॉर सेइंग सो, महात्मा गांधी ने वॉज नॉट अ ब्राह्मण सबके सर पे थोप दिया. वेजिटेरियनिज्म का मैं वेजिटेरियन हूँ तो सारी दुनिया वेजिटेरियन हो. अब उनका फेवरेट. You said a very interesting thing that maybe Marwadis and maybe you meant Banyas as a whole are very strongly vegetarian. ये कहाँ से आ रहा है? वो इसलिए आया कि they are the Western ethic, Protestant ethic of Max Weber. गोश्त में पैसा खर्च होता है, दारू में पैसा खर्च होता है. कुछ खर्च मत करो, गद्दी पे बैठ जाओ, वेजिटेरियन खाना खाओ, fart and belch and eat hing instead of lesson and say that I am a very pure person. I mean, I mean no offense to any community. सेम इज विद द ब्राह्मण. मैं आपके घर का पका नहीं खाऊंगा, सीधा मुझे दे दीजिए, मैं खा लूँगा. गिव मी प्योर घी, गिव मी प्योर बासमती का चावल, गिव मी बेस्ट चॉइसेस कट ऑफ जहाँ बलि होती है. द हेड, नेक एंड द शोल्डर गोज टू द ब्राह्मण कॉल्ड शापड़ी. सो यू नो एवरीबडी हु इज टेकिंग द कम्युनिटी फॉर अ राइड. इट कुड बी अ ब्राह्मण हु लेज डाउन द लॉ एंड जस्टिफाइज वॉट एवर ही डज, द आपधर्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. What I am arguing is, sir, that we are a nation of hypocrites. It is in our blood. And when it came, it started very early. जो संस्कृताइजेशन वाला चक्कर था, when the Vedic Aryans expanded eastwards and southwards,
दे वांटेड टू से कि ये तो सुपीरियर विक्टर है ना, विक्टर का खाना अच्छा होगा, राजसी खाना होगा। एंड आप जो कह रहे थे कि हम लोग बताते नहीं है, इट्स इंडिया इज अ मेजॉरिटी मीट ईटिंग नेशन, Of course, yes. मतलब बाय फार। They are not my. This is not my speculation. It's Government of India's Government National Sample data. Survey figures. 68% of Indians. और वो भी आई थिंक वो कम होगा क्योंकि कितने लोग अपने आप को It is like masturbation. You ask a boy, does he masturbate? He says no. Right. And when 90% of the boys do, Right. and the other 10 are lying. So the same thing is about National Sample Survey responses. 68% भी कम है। 68% तो एडमिट कर रहे हैं, बाकी वो हैं जो तिलक लगा के अमरूद, चाय की पत्तियां और अमरूद खा रहे हैं। I mean, I don't believe this. I think the problem is that if you have aspirational food, which you can't afford, then अरे आपको पता नहीं वेजिटेरियन खाने में मजे कितने हैं, because you have been denied that. और मजे तो है वेजिटेरियन खाने में, ऐसा कोई बात नहीं है, वेरी टेस्टी। उतने ही मजे हैं जितने नॉन वेजिटेरियन में। दोनों ही हैं, ये मतलब सारे मजे बराबर हैं। ऑल फूड इज वेरी If वेरी you swing both ways, if you are a आई bisexual, कैन नेवर लीव आलू, मतलब you can never leave aloo, but aloo came only 500 years ago. मे बी बट नाउ आई कांट। अच्छा है। मैंने कल ही might be able to leave meat, but मैंने maybe कल not to ही leave कढ़ाई aloo. छुट्टी कचौरी के साथ ही हिंग दिया आलू दम खाया है। क्या And I was so happy, and I had dahi बैंगन। I think people don't realize the aloo. I think 500 also is overstating it. I think as a popular vegetable, it's probably 100 200 years old. 150 years. हाँ। When Kolkata biryani put aloo, सोचिए। it was a princess मतलब dish. बंगाली खाना ही बर्बाद है आलू के बिना, और आलू था ही आलू नहीं 150 साल पोस्ते पहले नहीं तक। होगा, आलू कुछ भी नहीं होगा। भाजा गोश्त नहीं में भी तो होगा। बंगाली आलू डालते हैं। हाँ डालते, मतलब कशा it मांठू is में भी जाएगा, बिरयानी में आलू डालते फिश में भी आएगा। which is I think one of the world's greatest myths कि वाजिद अली शाह ने आलू डलवाया। I don't think नहीं that नहीं is नहीं, true. वो इसलिए डलवाया कि that ingredient was exotic. Exactly. उस टाइम तो महंगा एवोकाडो था बहुत उस महंगा वक्त था ना। था, एवोकाडो से महंगा था। एवोकाडो से महंगा। अच्छा पुष्पेश जी, if you had to, we're going to end the interview with a quick question. If you had to list your top 3 foods, Khichdi is one. खिचड़ी is one. But not the khichdi of the variety which the Prime Minister forces down the gullets of his guests कि वो बाजरे की खिचड़ी, गुजराती खिचड़ी. My khichdi would be a laziza khichdi, which होता है वो? Aurangzeb was very fond of. Who was on? Aurangzeb. Aurangzeb, It is called right. laziza. हाँ. It was a khichdi which was cooked actually by Rumi, the Sufi saint, by his disciples, who thought that he was abstaining from meat and would die because of malnutrition. इस खिचड़ी में खजूर है, प्लम्स हैं, रेजिन्स है, आमंड्स है, वॉलनट कर्नल्स हैं, एक आध पीस मीट का भी है, काबुली चना है। ये कैसा खिचड़ी वो पुष्पेश? अरे इसको तो आपने पूरा बहुत आप खा के खिचड़ी is everyday food, yeah? खिचड़ी इज नॉट ये तो एकदम, ये तो सही में मुगल वाले खा रहे थे। सॉरी, खिचड़ी इज नॉट एवरीडे फूड। क्या बंगाल में जो भुनी खिचड़ी होती है वो रोज खाते हैं आप? नहीं नहीं, बंगाल में तो वो जो elite जो आपकी मतलब खिचड़ी fancy food है, जब बारिश होता है आपकी तब वो- खिचड़ी हमारी खिचड़ी नहीं है। नॉर्थ इंडियन से लोग इसको नॉर्थ आपका ये नॉर्थ एंटी नॉर्थ इंडियन प्रेजुडिस है। हैव यू एवर हैड चीची की खिचड़ी? हाँ? चीची की खिचड़ी which is served in Krishna temples. The small child Krishna is supposed to have an upset stomach, and that खिचड़ी looks like loose motions of a child. Right. वो भक्त लोग खाते हैं बड़े मजे लेके। और खिचड़ी होती है, जो खिचड़ी के कई तरीके हैं। आपने अरहर की खिचड़ी खाई है कि नहीं खाई है? आपने माश की खिचड़ी जो संक्रांति के दिन बनती है खाई है कि नहीं खाई है, जिसमें कहा जाता है if you don't eat it on that day you will become a snail on the next जीवन। खिचड़ी by the way is the true all India food by the way. It is. If you think about it is there is every region has its own खिचड़ी and everybody loves it in their own except way. the Punjabis who don't have a strong Punjabi खिचड़ी strong खाते हैं। sweet khichdi, not that I know of, but there is this lady, Mrs. Jain, who is a publisher, Sagar owner. She has done a whole book on khichdis where 125 recipes of khichdi are there, each different from another. अभी तो आ रहा है खिचड़ी का सीजन, बारिश आ रहा है। खिचड़ी, बारिश में तो खिचड़ी, बैगन इलिश भाजा, माछ, हाँ, आलू का भरता, आलू का fried चोखा, बैगन। आलू का भरता, बेगुनी, बिल्कुल ठीक। Too good. हाँ, so that's dish number 1. Number 2. Dish number 2 would be shami kebab and roti. Right. I would love that. I can eat that cold, I can eat that ठंडा गरम, but shami kebab made at home, not these frozen ones ready heat and eat at home. तवे में सिका हो, तला ना हो, जो दिल्ली में तल दिया जाता है। सिकना चाहिए वो, like a सिकना टिक्की। मतलब अच्छा, मगर तेल में सिकेगा ना? नहीं, तेल बहुत ही मिनिमल बहुत ही तेल कम में तेल सिकेगा। सिकने का अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं होगा, उसकी अपर लेयर में खस्तगी आ जाएगी। दैट अगेन इज अ हार्ड वर्ड टू ट्रांसलेट। अगर आप अच्छी टिक्की खा रहे हैं तो उसके ऊपर एक क्रस्टी क्रंच होगा, हाँ, और अंदर में मलमल की तरह होगा। अरे मलमल की तरह तो वो आपको गलोटी कबाब याद आ रहा है। शामी कबाब में बाइट होगी, उसके भीतर अगर शीकम पूरे तो प्याज, अदरक और रेजिन भरा होगा, जला हुआ। इसमें भी आपने रेजिन डाल दिया?
अगर खाना अच्छा होगा तो अब why are you against raisins? I am against मीठा नहीं तो आप टमाटर का टोंक भी नहीं खाते होंगे, उसमें भी रेजिन पड़ता है, उसमें भी खजूर पड़ता है। वो तो डेजर्ट है। वो डेजर्ट ठीक है, हमारा आपका है कि हमारे खाने में रेजिन पड़े तो ठीक है, हमारे खाने में खजूर पड़े तो ठीक है, आपने क्यों डाल दिया, वो तो हमारा था। माई प्रॉब्लम इज इट कंबाइंस वेरी वेल द सेवरी इन द कीमा विद द स्लाइटली स्वीट टैंग ऑफ अ फ्रूट। ये थोड़ी किशमिश पूरा भर रहे हैं उसमें आप, बस एक बाइट आ जाए, एक किशमिश आ जाए। I also love Janega, but we eat it with dal bhat. That's number 2. Number 3, if you ask me, is nothing like it but a roti, well made roti without any ghee, चूल्हे की लकड़ी वाली रोटी with any one sabzi which is seasonal. No garam masala. My favorite is turai in season. I don't like aloo that much. Because पहाड़ में तो आलू खाते आदमी। You don't like aloo that much? Like आपने बहुत ही controversial statement एंड के रखा। I don't like aloo, like I like some aloo. I like the Kashmiri dum aloo. I like the Banarsi dum aloo. I also remember a party at my Pramod Kapoor's house in Sigra in Banaras where I was given nothing else. Pramod Kapoor publisher? हाँ, रोली, वही तो मेरे publisher थे, वही तो मुझे फेडन में ले गए, उन्होंने तो मेरा food career शुरू किया। The interesting part is this कि in his house all I got was 6 varieties of aloo. आलू के मठे वाले आलू, दही वाले आलू, टमाटर वाले आलू, सूखे आलू, आटा भून के उसके संग वाले, जीरे वाले आलू, वृंदावनी आलू। जन्नत लग रहा है तो। हाँ, जन्नत लग रहा है आपको तो, मतलब आप तो हाँ, आपको you would have got a potato high there, you would have been groggy on your feet and coming out. अभी आपको मैंने आलू का जर्दा नहीं बतलाया और आलू का कलाकंद नहीं बतलाया जो पहाड़ में बनता है। और पहाड़ में आलू के गुटके बनते हैं जिसमें टिबेटन मार्शेस की हिमालयन साइब्स का तड़का पड़ता है। और आलू के खुले की चाट हमने अभी जिक्र नहीं किया, और आलू का ठंडा चोखा भी नहीं किया। तो मतलब बट आई लाइक अ सब्जी। आलू का चोखा तो क्या? आई लाइक अ सब्जी जो सिंपल सब्जी हो, लौकी हो, तुरई हो, सीताफल हो, जिसमें ज़्यादा तामझाम ना हो। सीताफल मतलब क्या? अब सीताफल जिसको हम पंपकिन कहते हैं, सीताफल तो अब महाराष्ट्र में तो शरीफा हो जाएगा। इसको काशी फल कह लीजिए आप, राइट। कुमड़ा कह लीजिए, जो आपका कुमड़ा है वो हमारा ही है। लौकी, कुमड़ा, पटल, ये सारी सब्जियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब जो व्हाटएवर इज सीजनल। I think this is one thing of once I turned 30, I started to like potol and jhinge and all these watery vegetables which I used to hate as a child. You hate them as a child, but and then you love them as a middle-aged man. You eat a Banaras mein potol, which melts in your mouth. So I said, how do you make it? He said, you can't eat it in Delhi. वो देरा में उगता है जहाँ the flood plains है नदी के, तो वो is a small size thing, कोई मसाला नहीं, बस ज़रा घी में भूनिए और खाइए, क्या मज़ा आता है। On that delicious note, Pushpesh ji, thank you so It's much. Wonderful. Lovely talk. Lovely talk. Thank you so much for watching this episode of Scroll Adda. We have a special ending message from Pushpesh ji. I would like you to like, subscribe, scroll.in and see me, my face, my wit and wisdom. I like to do it myself. I would be very happy if you do that. I would also like you to support Scroll. So scroll.in/contribute is something which I would like to recommend very, very strongly, because I think if you do this, the footprint of a Scroll will increase, their viewership will increase, and hopefully one day they will be offering a little dakshina to people like me who end up in their office. Listen to what Pushpesh is saying. Bye-bye. That's all we have for this episode. Thank you so much. Thank you.